नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया नॉलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। जदि आपण आम चैनल को प्रथम आछन दयाकोरी चैनल सब्सक्राइब बटन क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियोटी भल लगे निश्चय वीडियोटी को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे भूलें जहाँद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर। तो ये हाईकोर्ट को आसला गुरुत्वपूर्ण राय जो थी कि राज्य कर्मचारी एक गुरुत्वपूर्ण राय दिखाई जो प्रमोशन सर्विस बेनिफिट एवं पेंशन को नहीं जो गोटे गुरुत्वपूर्ण राय दिखाई आम से विषय आज संपूर्ण आलोचना करवा। दयाकोरी आसतु आरंभ करवा आज खबरटी। ये आप अर्डर देखिपे अर्डरटी ये मुझे आटाच करी जोटा माननीय हाईकोर्ट को अर्डर अच्छी कौन अच्छी आज वीडियो आसतु देखा। तो ये आप देखिपे राइट टू बी कंसीडर फॉर प्रमोशन सर्विस रिटायरमेंट persist even if the legitimate claim not acted upon by the employee while in service ओडिशा हाईकोर्ट। ताले ये कहुई जे कि लेजिटिमेट क्लेम जोटा अच्छी अर्थात आईनगत जोटा अधिकार जदि आपंकर सठिक थी ताल राइट टू कंसीडर फॉर प्रमोशन एंड सर्विस रिटायरमेंट बेनिफिट जो पेंशन अच्छी ताकू प्रदान करने बाध्य। तो से विषय आम संपूर्ण खबरटी देखा। ये ओडिशा हाईकोर्ट ए सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस शशिकांत मिश्र जो अच्छा डिसमिस द क्लेम ऑफ सोमनाथ मंडल जो अच्छा रिटायर्ड एम्प्लॉई ऑफ ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर नोशनल प्रमोशन। तो नोशनल प्रमोशन पर से जो अप्लाई करते कौन अच्छी हाउएवर द कोर्ट डायरेक्टेड द यूनिवर्सिटी टू इन्वेस्टिगेट किंतु कोर्ट यूनिवर्सिटी को निर्देश देते इन्वेस्टिगेट करने को वेदर it कहुई whether vacancy in the unreserved category your category existed during the relevant period। ताले जेतोले एम्प्लॉई सर्विस करथिले सर्विस रे थिले सेही समय अनरिजर्व कैटेगरी रे हमर वैकेंसी थिला कि नहीं। द कोर्ट हेल्ड दैट एन एम्प्लॉई राइट टू बी कंसीडर फॉर प्रमोशन जोटा कर्मचारी अधिकार प्रमोशन पाई इफ अक्योर्ड ड्यूरिंग देयर सर्विस डज नॉट लैप्स अपॉन रिटायरमेंट जोटा कि लेजिटिमेट क्लेम जदि थिबो रिटायरमेंट पर प्रमोशन देवा बाध्य। इट इज एम्फासाइज दैट फेलुअर बाय द एम्प्लॉयर टू एक्ट ऑन ए लेजिटिमेट प्रमोशन क्लेम व्हाइल द एम्प्लॉई वाज स्टिल इन सर्विस डज नॉट इनवैलिडेट द एम्प्लॉई एंटाइटल्ड टू कंसीडर इवन पोस्ट रिटायरमेंट। जड़े कर्मचारी रिटायरमेंट है प्रमोशन मिल पार जदि से सर्विस रे थिबा समय क्लेमटा जब लेजिटिमेट अर्थात आईनगत होता प्रमोशन दि जाए नथिबो किंतु परवर्ती पर्यायर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पर जना पड़ो जे प्रमोशन पाइबा कथा से रिटायरमेंट पर प्रमोशन पाइबापी हकदार बोली हाईकोर्ट कहते। सोमनाथ मंडल जॉइंट जे कि सोमनाथ मंडल जे थे जूनियर असिस्टेंट हिसाब से 1986 मसीह जॉइन करते। ओवर टाइम ही वाज प्रमोटेड टू सीनियर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लेवल 1 बीइंग ए शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट। मंडल क्लेम्ड एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन टू असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो अकाउंट ऑफिसर ए पोस्ट रिजर्व फॉर SC/ST कैंडिडेट किंतु सी शेड्यूल कास्ट जो SC/ST पोस्ट रिजर्व थिला कैंडिडेट सी क्लेम करते। ही आर्ग्यूड दैट डिस्पाइट हिज क्वालिफिकेशन एंड सीनियरिटी ही वाज बाईपास्ड इन फेवर ऑफ जूनियर ऑफिसर अंडर द कैचअप प्रिंसिपल व्हिच रिस्टोर्ड द सीनियरिटी ऑफ दोज प्रमोटेड एर्लियर बट हैड बीन सरपास्ड ड्यू टू रिजर्वेशन अनुसार प्रमोशन मिल पार नाला जोटा कि मंडल हैड प्रीवियसली चैलेंज हिज एक्सक्लूजन फ्रॉम प्रमोशन बिफोर द कोर्ट जोटा कि 2014 मसीह सी गोटे पिटिशन दाखल करते। फॉलोइंग दैट द कोर्ट डायरेक्टेड द OUT टू कंसीडर हिज रिप्रेजेंटेशन बट द सेम वाज रिजेक्टेड इन द 2014 जोटा रिजेक्ट होता द ग्राउंड दैट द पोस्ट फॉर SC कैंडिडेट हैड ऑलरेडी बीन फिल्ड बाय द अनदर ऑफिसर मधुसूदन बेहरा एंड हिज प्रमोशन वुड ओनली बी कंसीडर अपन द पोस्ट वैकेंसी जोटा कि पोस्ट वैकेंसी अनुसार दिखाई। डिस्पाइट बेहरा रिटायरमेंट इन 2015 OUT डिड नॉट प्रमोट मंडल बाय द टाइम ऑफ मंडल रिटायर्ड ऑन 31 2020 जो से रिटायर्ड कले हिज प्रमोशन ग्रीवेंसेस रिमेन अनरिजॉल्व कंप्लेनिंग हिम टू अमेंड हिज रिट पिटिशन टू द 6 नेशनल प्रमोशन एंड एसोसिएटेड पेंशन बेनिफिट दवाई से क्लेम करते। जो थर कि आर्गुमेंट था मंडल वकील जे आर्गुमेंट करते हिज इनिशियल अपॉइंटमेंट जोटा थिला एंड सब्सिक्वेंट प्रमोशन एज एन SC कैंडिडेट वेर वैलिड अंडर द प्रोविजन ऑफ द ओडिशा रिजर्वेशन वैकेंसी एक्ट व्हिच अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ पोस्ट बिटवीन SC/ST कैटेगरी
Despite being the eligibility and promised consideration post bearer retirement, his case was ignored. Further, he argued that a vacancy exists in the unreserved category for which he was qualified, that the university failure to promote him before his retirement was unjust. As such, Mondal requested a national promotion with effect from 2011 से national promotion पाई जोटा कि दाबी करथिले द रेक्टिफिकेशन ऑफ हिज पेंशनरी बेनिफिट जो तांको मिलुची ताकू रेक्टिफाई मध्य करिया पई ओएटी रिप्रेजेंटेड बाय मिस्टर पी पंडा जे आर्ग्यूड दैट मंडल इनिशियल अपॉइंटमेंट अंडर द एससी कैटेगरी वाज इरेगुलर as it violated the ORB Act stipulation. The Act permit the exchange of post only in case of अनअवेलेबिलिटी ऑफ SC/ST कैंडिडेट जदि नथिबे सेही समय तांकर पोस्टा एक्सचेंज करा जाय बट सच कैंडिडेट वेयर अवेलेबल एट द टाइम ऑफ मंडल रिक्रूटमेंट फर्दरमोर वे टू क्लेम दैट द गवर्नमेंट क्लारिफिकेशन इन 2019 रे गवर्नमेंट गोटे क्लारिफिकेशन देथिले स्टेटेड दैट मंडल कुड ओनली बी कंसीडर एज यूआर कैटेगरी कैंडिडेट द यूनिवर्सिटी मेंटेन दैट as there are no vacancy in the UR category at the time of his retirement, Mondal case could not be processed. तापर कहला कि OIT also noted that it had invited objection to the revised gradation list but did not address whether Mondal objection were considered for resolve before his retirement. OIT further contended that promotion could only be granted following a departmental promotion committee meeting which could not be conveyed after Mondal retirement. Therefore, his claim for a national promotion lacked merit. कोर्ट रिजनिंग कोर्ट कौन कहते माननीय हाईकोर्ट ये रिजनिंग कहते फास्टली द कोर्ट आइडेंट द इरेगुलारिटी इन मंडल्स इनिशियल अपॉइंटमेंट अंडर द ST कैटेगरी डिस्पाइट बिलोंग टू द SC कम्युनिटी जेहेतु से SC कम्युनिटी थे किंतु ST कैटेगरी नियुक्ति जाइला व्हाइल OIT एंड द गवर्नमेंट मेंटेन दिस वाज ए वायोलेशन ऑफ द ORB एक्ट द कोर्ट फाउंड दैट मंडल वाज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस इरेगुलारिटी जो कि मंडल से irregularity responsible नुह as his service had been rendered for the decade without challenge. The court held that the initial appointment should not be questioned after such a long period. जोटा कि एत वर्ष चाकरी कला पर भी इनिशियल अपॉइंट को आम क्वेश्चन करें नहीं. Consequently, Mandal's appointment was regularized. जोटा कि रेगुलाराइज पर कराइला. He was to be treated as a UR candidate following the 2019 गवर्नमेंट क्लारिफिकेशन अनुसार UR कैटेगरी आमर गणा जाइला. Secondly, regarding the promotion dispute, the court emphasized that while no employee has an inherent right to promotion, there is a right to consider for it. OIT failure to process Mondal case after receiving the government clarification in 2019 was deemed unacceptable. Mondal right to consider for promotion remained intact despite his retirement as his application was pending at the time. However, the court noted that absence of clear evidence regarding the availability of vacancy in the UR category when the clarification was issued, OIT failure to provide detail on the gradation list and the vacancy status जोटा कि OIT failure होइतिला provide करिया पई despite having invited objection is deemed a significant omission in their defense. Lastly, the court rejected OIT argument. The Mondal claim for promotion was infructuous due to which retirement. The court found that while Mondal had retired, he had a valid right to have been considered for promotion during his service. जोटा कहला मंडल को valid right अच्छी during service रे तांग promotion दबे denying him the right the technically of retirement was inappropriate बोली माननीय कोर्ट रेडी कहते. तापरे माननीय कोर्ट शेष कहते कि तांकर जो केस अच्छी मंडल केस अच्छी ताकू प्रॉपर्ली OIT को निर्देश देते प्रॉपर्ली से इन्वेस्टिगेट करा जदि से समय पोस्ट वैकेंसी अच्छी प्रमोशन एवं तांकू प्रमोशन देवाई माननीय हाईकोर्ट कहते किंतु तांकू कौन करा ना OIT इन्वेस्टिगेट कर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट प्रोड्यूस कर कार्यानुष्ठान ग्रहण कर. आज ये खबर जब आपको खबर भल लगे दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे कमेंट करेंगे भूलिए. धन्यवाद.